आज घरे घरे ओएसआईएस कार्यक्रम को पुणी थे स्वागत करुच्ची मु विकास पाणी। प्रति वर्ष एक प्रोग्राम स्टार्ट हुए विभिन्न ना रे किंतु घरे घरे ओएसआईएस प्रोग्राम रो उद्देश्य होची प्रत्येक छात्र छात्री सिविल सर्विस विषय रे जानिबा दरकार, पढ़िबा दरकार एवं सक्सेस पाया दरकार, सफलता पाया दरकार। यह होची उद्देश्य, आउ किछि नै। तबे से जाओ आपण माने समस्त टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जांतु। टेलीग्राम चैनल रे अपडेट ऑलरेडी दिया जाइछि। मु केवल साउंड चेक कला परे आज रे पॉलिटी क्लास को आमे आगो को बढ़ाइबा। जेहेतु एटा प्रथम क्लास माने ए वर्ष प्रथम क्लास। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग हेगला 12टा हेगलानी लाइव अछि। मु केवल टेलीग्राम चैनल रे आउ साउंड टिके चेक कर दे, तापर हम आज रे कार्यक्रम स्टार्ट कर दबा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग हेगला 12टा हेगलानी लाइव अछि। हां ठीक है, साउंड ठीक अछि। साउंड टिके चेक कर दे, तापर तो साउंड ठीक अछि, आउ किछ असुविधा नै। तो चलंतु आज रे कार्यक्रम आरंभ करिया। आज रे कार्यक्रम रो टॉपिक होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड and in this session we'll be talking about how British came to India and how India was under British administration. We'll be discussing all these things in very few minutes. Thing is that British came to India in 1600. Before going to the topic, let's understand about the British, when came to India and what was the purpose of coming to India. All other things we are going to discuss first of all. Then we'll be going to discuss administrative part, commercial part, and all other political activities of East India Company. कथा होची कोन ब्रिटिश आसिले 1600 मसिया रे। ब्रिटिश आसिले 1600 मसिया रे। ध्यान से बुझंतु 1600 मसिया रे ब्रिटिश आसिले एवं भारत को आम देश को छाड़िले केबे। सिंपल कथा 1947 रे। टिके बैकग्राउंड बुझंतु। मोटे काम करूची एती भितर आक मु बैकग्राउंड बुझे देबी, तापर आमे कोन करबा या विषय बुझे ये जिंस कोन। कथा होची कोन 1947 रे भारत को छाड़िले आसले केबे 1600 रे आसले। पाखा पाखी 350 वर्ष भारत वर्ष रहिले। ठीक कथा होची आसीथिले केमिति आसीथिले ईस्ट इंडिया कंपनी आसीथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी हिसाब रे आसीथिले, किंतु जब भारत को छाड़िले सेतबेले ब्रिटिश गवर्नमेंट हिसाब रे छाड़िले। बुझी पारछनी गोटे कंपनी आसला भारत वर्ष को, दैट इज कॉल्ड योर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सोल पर्पस ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज ओनली टू डू बिजनेस करिया पे आसीथिले। बुझी पारछनी किंतु बिजनेस करू वाणिज्य बसती लक्ष्मी हम समस्त जानि चंदी। भाई साहब धन को उल्टे देला होची कोन न ध जा धरि परिबनी ता होची धन। मन को उल्टे दिले न म जा मरे नहीं ता होची मन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी रो धन जतरे बढ़िला मन उतार आकाश छुआ हला आ ताको धरि परलेनी। अर्थात कहिबार मीनिंग होची ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस, बट आफ्टर few years, you can say after 100 years, 100 plus years, the East India Company came to realize that our business is not business, something else. आमे केवल बिजनेस करे पे आसिनु, आउ किछि करियार अछि। धन जतले बढ़िबो आजिका डेट रे आपण देखंतु मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर रिच। राजा राजुडार जमीदार जे थिले बे पॉलिटिशियन अछन ना नाही। बहुत वेरी रेयर पीपल दे आर स्ट्रगलिंग टू बिकम एमपी एमएलए बा मिनिस्टर हो पाए। बहुत गरीब लोक जे के एमपी एमएलए हेछ, वार्ड मेंबर भी हेई परिबनी, टंका नथिले। तो कहबार अर्थ होची जे ईस्ट इंडिया कंपनी आसला बिजनेस करिया पे, किंतु धीरे धीरे कोन धन माने जेमति बढ़िला सेतबे कोन भारत को शासन करिया को लागिला। बुझी परछन एवं शासन कर धीरे धीरे केबे शासन कला 1600 आगे शासन करि पर नथला। बुझन पूरा भलार बुझन 1600 से तो छोटिया माने बिजनेस करे चक्कर डंगारे आसीतिले, जहाज रे आसीतिले ना। परमिशन भी मिल नथला भारत वर्ष शासन करिया पई बा बिजनेस करिया पई। शासन करिया दूर कथा, बिजनेस करिया पई परमिशन मध्य मिलबा कष्टकर थिला। तबे से जा हो जहांगीर को पाखर परमिशन नै करी ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस आगे स्टार्ट कर देले। धीरे धीरे बिजनेस करू कोन हैला 173 इयर्स माने 1600 रु मापन के कहया पई चाहूची 1600 रे आसिले। बुझी परछन 1600 रे आसिले एवं 1773 पर्यंत केवल बिजनेस करूथले। एवं 1773 रु आपन को बताइबा पई चाहूची, एटा लिबे दउचे बे घुंचे लागी
अच्छा लिखिए देख अच्छा ठीक अच्छे 1600 मसीह आसते बुझी पार्छन एटा ठीक अच्छे कंप्लीट डिलीट करी बुझे दउछ 1600 मसीह आगे आसीथिले किछि नै 1600 आसीथिले केबे गले 1947 हम समस्त जानिछन 1600 रु 1773 पर्यंत ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बिजनेस करथला आई रिपीट 1600 रु 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथला खाली बिजनेस 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 टंका धन ये सब जिनस आगे दरकार रत्न दरकार बुझी पार्छन किंतु 1773 जेतले यू नो टंका आसीगला धन आसीगला वेल्थ आसीगला से माने 1773 रु 1853 पर्यंत बुझी पार्छन शासन करिया आरंभ कले बुझी पार्छन एवं एई फेज माने 1853 पर्यंत माने 1773 रु 1853 ये गोटे फेज होची माने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो दीटा पार्ट अछि ये गोटे होची एडमिनिस्ट्रेशन एवं एटा मु लिभिया पे चेष्टा करूची जदि लिभिला भलो कथा लिभि जाइछ बुझी पारछन 1853 रु बुझन कलर चेंज कर दबा संक्षेप बुझी जइबो 1853 जो अछि ना ए 1853 रु पूरा 1947 पर्यंत फ्रॉम 1853 टू 1947 ये गोची सेकंड फेज बुझी पारछन टॉपिक भलो आर बुझन टॉपिक रो ना कोन थिला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड माने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन in India can be separated, can be distinguished into two parts. Number one part 1773 to 1853 that is called company rule. Company माने East India Company rule. Are you getting my point? धीरे धीरे बुझिबे जदि न बुझि पारछंती आउ थरे आरंभ वीडियो देखि देबे ग्यारंटी क्लियर हबो किछि व्यस्त नै कंपनी रूल ताऊ कोन बुझि पारछन एवं ब्रिटिश टाइम रे आज पर कंपनी को मध्य शॉर्टकट रे सीओवाई लिखा होछ आपण मन देखिबे जो आर्म फोर्सेस रो कंपनी बाटलियन थ्रू अछि ये शॉर्टकट रे कॉय बोल लिखा जाय कंपनी सो एनीवे द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कॉल्ड एज कंपनी रूल ठीक किंतु 1853 पर सिपाही विद्रोह हला बुझि पारछन 1853 पर सिपाही विद्रोह हला तो 1858 रु जो 1947 पर्यंत सी जो सेकंड फेज है ना सेकंड फेज है ताकू कहते कौन क्राउन रूल आपन कहे ये क्राउन रूल केमती आसला क्राउन रूल माने होची ब्रिटिश डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कला शासन कला बुझी पारछन डोंट वरी आज क्लास रे केवल कंपनी रूल को हमें डिस्कशन करिबा एवं नेक्स्ट क्लास रे क्राउन रूल डिस्कशन करिबा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो दुईटा पार्ट को आराम से बुझी हबो जेहेतु टिके लंबा टॉपिक मु चिंता कली जे दुईटा पार्ट रे हमें स्टार्ट करिबा सो एनीवे लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल टॉपिक कंपनी रूल आज हमें एबे कोन पढिबा कंपनी रूल पढिबा एबे क्लियर कली देखंदु ठीक चलंतु कंपनी रूल रो प्रथम एक्ट पढिबा मु कहितली केबे आस्थिले ब्रिटिश 1600 कोन करथले बिजनेस 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 केते वर्ष पर 173 इयर्स 173 वर्ष परे कौन है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो ब्रिटिश गवर्नमेंट जानिया को पहले बाबा ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट जहाँ को बिजनेस करने पठे आमको टैक्स दब ये आउ कि खेल कर भाई खेल कौन करुच्ची आगे पैसा अधिक है ना मुंड पूरा जदि से मुंड भेजा जो ब्रेन इंटेलेक्चुअल लेवल जो हाई न थाए बुझीपार इंटेलेक्चुअल लेवल हाई न थाए ताले कौन हम टलमल हम माइंडटा पैसा एमती जिनस जार 10,000 टाइम इनकम मासकू लक्षे टाँग देदेले कौन जब इंटेलेक्चुअल लेवल हाई न था सी आगे कौन कर कौन धर जापर जो कोटी टाइम मिल जाए 1,000 कोटी मिल जाए अरबपति खरबपति तो कथा बदल जाऊँ कि नहीं सो व्हाट आई मीन टू से द मेन पर्पज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट टू डू बिजनेस इन इंडिया आल्सो टू लूट आल्सो टू एक्सप्लॉइट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कथा आपको बुझीबार अछि सो एनीवे So what I mean to say 1773 रू स्टार्ट जो है से एक्ट को आज रेगुलेटिंग एक्ट कौन को आज रेगुलेटिंग एक्ट तो भाई साहब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को एबे हमें डिस्कशन करिबा वेरी सिंपल रेगुलेटिंग एक्ट एटार दुई चारटा पॉइंट मन रखि दियंतु संग संग दुई चारटा पॉइंट मन रखंतु चारिटा पॉइंट अछि चारि पांचटा पॉइंट अछि प्रथम कथा होची दिस एक्ट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट व्हाई दिस एक्ट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट कौन पई रेगुलेटिंग एक्ट को जाए बिकॉज टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज टू रेगुलेट the all you know whatever those taking bribe nothile officials
टू चेक दैट पार्ट आल्सो गिफ्ट नौथले ताकू चेक करिया पई चाहुतले एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को माने चेक करिया चाहुतले पॉलिटिकल पार्ट को चेक करिया चाहुतले कमर्शियल सब किछि चेक करिया पई चाहुतले थ्रू एक्ट सेथि पई 1773 को कुआ जे रेगुलेटिंग एक्ट माने आपण आउ गोटे अर्थर कहया गले द सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम दिस एक्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी जे सेंट्रलाइजेशन केबे स्टार्ट हेतला सो 1773 तो ये पॉइंट आगे मन रखंतु सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड ए गोटे पॉइंट मन के सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन दिस एक्ट सेकंड पॉइंट होची वारेन हेस्टिंग्स ना सुनंतु सेते बेले कोन थिला देयर वर थ्री मेजर प्रेसिडेंट्स वारेन हेस्टिंग्स जे थिले ना बेंगल रो कोन हेले जगह में वेस्ट बेंगल बा बेंगल कोचन बंगला कोचन बेंगल रो कोन हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल या पूर्वर कोन होतला टिके कहि देबा पई चाहूची तीनटा प्रेसिडेंसी थिला सेते बेले बेंगल माने बेंगल थिला आउडे बॉम्बे थिला आउडे बेंगल माने कोलकाता भी आपण कहि परिए कि असुविधा नहीं कोलकाता प्रेसिडेंसी कुआ जाए बेंगल प्रेसिडेंसी कुआ जाए ता पे ओरेडी हबर नहीं सो बेंगल प्रेसिडेंसी माद्रास प्रेसिडेंसी एक कथा आपण जानछन आउटे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कथा होउची कोन ना ये बेंगल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थिले तांको कुआ जाए कोन गवर्नर किंतु ये एक्ट रे माने 1773 ऑनवर्ड्स गवर्नर जनरल बोली कुआ गला कोन कुआ गला गवर्नर जनरल तो भाई साहब मन रखिया पड़े प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले वारेन हेस्टिंग्स थिले आपन को एती मन रखिया अछि आ कि दरकार नै सेकंड कथा होची सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस एक्ट माने कहिबार माने होची सुप्रीम कोर्ट रो जो कांसेप्ट आज का सुप्रीम कोर्ट जो अछि हमें तो जतले प्रैक्टिस करिया को जाउची सुप्रीम कोर्ट कथा होची आपन कहि 1950 जनवरी 26 जनवरी 1950 रे आज का डेट रो सुप्रीम कोर्ट है जोटा कि 1935 एक्ट रे 37 रे फेडरल कोर्ट थिला परवर्ती अवस्था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जन 1950 फेडरल कोर्ट came to be known as renamed as supreme court आपन मन रखियो पड़िबो बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम इन 1773 1773 सुप्रीम कोर्ट कथा कहूची ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी थिला बेले को प्रकार सुप्रीम कोर्ट थिला एबे ता विषय कथा हवा तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हेतिले एवं आपन कहया पई चाहूची सात जन माने आपन जानतु एलिजा इम्पे सर एलिजा इम्पे धीरे कहूची सर एलिजा इम्पे जे थिले चीफ जस्टिस थिले किंतु आपन मन रखिबा उचित गोटे कथा ये जो सुप्रीम कोर्ट थिला ना सेठी सब ब्रिटिशर्स माने जजेस थिले इंडियंस माने को अलाउ करा जाउ नथला परवर्ती अवस्था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विषय में कथा हबा जोथरे कि इंडियंस वर आल्सो अलाउड बट इन दिस सुप्रीम कोर्ट इन 1774 actually under this act 1773 supreme court was established in Kolkata in गोटे वर्ष तो लागिबो ना 1774 सुप्रीम कोर्ट हेतला आपन को मन रखियार अछि ठीक एबे हम कथा एती पॉइंट मन रखियार अछि एबे हम कथा बा ई रेगुलेटिंग एक्ट रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भाई साहब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोन भल रे बुझंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होउची सपोज आज का डेट सब विभिन्न प्रकार कंपनी अपन में देखते कंपनी तो कंपनी डायरेक्टर थांती निर्देशक थांती सो व्हाट आई मीन टू से ईस्ट इंडिया कंपनी इज ए कंपनी नो डाउट सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने कह रहा था गोटे डिसीजन निया जीवो ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई शासन करे आरंभ कलानी जो डिसीजन हम जणे नेगले केमति हबो सो सेमंते एक तो भूल डिसीजन नउथले ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने बहुत बड़े डायरेक्टर्स रहिबे निर्देशक रहिबे सेमाने जहा डिसीजन नेबे समस्त मिसी सेटा हबो एक तो आगे को भला लुटुथले चिंता करूं छाड़ से कथा तबे से जाओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज क्रिएटेड अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट बुझी परछन एवं ये रेस्पोंसिबल थिला कोन पॉलिटिकल जहां भी सब प्रकार पॉलिटिकल कमर्शियल सब एक्टिविटीज पाई फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रेस्पोंसिबल बट इन द latter part in 1784 under Pitt's Act we will be discussing very shortly court of director was there no doubt and a new body called board of control was created we'll be discussing that in second slide so anyway court of director was created under this regulating act 1773 आपन मन रखियार अछि बेसी किछ मन रखियार नै आ गोटे कथा जेहेतु चेक करथले बैलेंस करथले तनो गिफ्ट ब्राइब वगैरह वगैरह जाउ जोडी टंका पैसा कारबार हो निहात के आगो पछ हबो
बुझी परछन तेल को जदी आपण आनिबे जेमति हाथ टिके तेल लागिवो तो टंका पैसा धन रत्न ये सब जो भारत नहीं कि लुटुथले ना तो कथा होची कोन ये नियम बनले भाई साहब तुम क्या पाखर गिफ्ट नहीं पारिबे जमीदार पर गिफ्ट नहीं पारिबे किछि फैसिलिटी दवा पई आपण किछि अर्थ नहीं पारिबे नाही सो प्रोहिबिट करा हितला को गिफ्ट नवा पई प्रोहिबिशन ऑफ यू कैन से ब्राइब नहीं पारिबे नाही बा गिफ्ट ये सब जिंस एक्सेप्ट करि पारिबे ना का को दिले ईस्ट इंडिया कंपनी अफसर मानन को कोगला अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यू हैव टू रिमेंबर वेरी सिंपल एती मन रखन बेसी आगे दरकार नाही चलंतु नेक्स्ट जिबा 1784 you see 1784 is called Peace India Act why this is called Peace India Act let me explain Peace India Act बोली काई को जाय टिके रोंद आ टिके कैमरा ऊपर कर दबा किछ ना बोर्ड देखा जाऊ किछ ना साइड पे देखा जाऊ anyway what I mean to say why this is called Peace India Act you know William Pitt was prime minister in 1784 in UK parliament UK parliament रे माने UK रे के थिले प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट सो विलियम पिट जो थिले तांको ना जेमते आज का डेट रे भी प्राइम मिनिस्टर जे रहउचोंदी इवन आल्सो सिंस इंडिपेंडेंस समस्त ना देखियो सुन ना रे लगा एच बुझी परछन ना नाही तो समस्त क्रेडिट नेबा चाहते ऑब्वियसली क्रेडिट नेबा उचित नउचोंदी किछ असुविधा नाही किंतु किछ किछ देश अछि इन यू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अपन विदेश से भ्रमण करी आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज इन यूरोप एंड आई हैव सीन दैट even today also they respect the country and they always you know designate airports highways even also everything in the name of a country not in the name of a person maybe prime minister president से भी तो हमरे बड़ी लोक ना तो देश उद्देश्य रे ना को जाय आ मोर भी पर्सनल व्यू छ कहा ना रे आगे रहया उचित न बुझ परछन सेतरे इगोइज्म डेवलप कर जाय सो एनी देश आगे आगे केही आगे माने कोन कोनती बरन होती देश आगो सो एनी व्हाट आई मीन टू से Peace India Act William Pitt was prime minister at that time in big parliament so what I mean to say ए चारटा पांचटा पॉइंट अपन मन रखिया पड़िबो देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करा गला आगरो कोन थिला 1773 रे कोन थिला अपन मन कहितली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जोटा कि अपन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रेस्पोंसिबल धीरे कहूची कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रेस्पोंसिबल फॉर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव commercial all activities of East India Company but you can say board of control was created to distinguish the functions that means simply you can say court of director was responsible for commercial functions and board of control was responsible for administrative functions let me repeat this point जो court of director ये कौन पे responsible थिला माने कमर्शियल एक्टिविटीज कमर्शियल ठीक कमर्शियल शॉर्ट रे लिखली एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोन थिला पॉलिटिकल बा जाहो कहते एडमिनिस्ट्रेटिव कथा बुझिबो के पॉलिटिकल बा एडमिनिस्ट्रेटिव कथा प्रशासनिक कथा के बुझिबो आगे आपनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दीटा जो बॉडी तयारी करा गला ताको कहै छै डबल गवर्नमेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट इज डबल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे कंबाइन एंड दे डिस्टिंग्विश that is how we came to know that double government was created under this Peace India Act 1784 1784 मसिया रे कमर्शियल एक्टिविटीज बुझिबा पई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रेस्पोंसिबिलिटी बा दायित्व दिया गला एंड पॉलिटिकल फंक्शन बा प्रशासनिक कार्य बुझिबा पई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ए न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड अंडर दिस पीस इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भीतर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे पोस्ट क्रिएट करा जायथला गोटे बॉडी क्रिएट करा जायथला प्रीवियस एक्ट 1773 रे 1784 मसिया कोन करा गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करा गला जोटा कि आपण कहि परिबे पॉलिटिकल फंक्शन को बुझिया पई बा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को बुझिया पई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आई रिपीट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज रिस्पांसिबल फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर इंडिया फॉर लूटिंग इंडिया को लुटिबा पई ये व्यवस्था करा जायतिला एंड दिस व्यवस्था दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल गवर्नमेंट लेटर इट वाज आल्सो रिमूव्ड पर डबल गवर्नमेंट को हटाई दिया गला परवर्ती अवस्था में कथा बा फॉर टाइम बीइंग प्लीज रिमेंबर दिस डबल गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड in this 1784 Peace India Act. So let's understand another point. ये पॉइंट हमें बुझे अच्छा ठीक है ये पॉइंट आगे बुझी दियंतु एई जो कमर्शियल फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन टा डिस्टिंग्विश माने सेपरेट हैला ऑलरेडी बुझे सारिची सो प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन केतेबेले आसी पारे अंडर क्वेश्चन केतेबेले आसी पारे अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट
commercial activities and political activities or administrative activities were separated, were distinguished. Option दे दो 1784 Patent Act, 1773 Regulating Act, बुले टुले कर पचार दो. So please remember this point. बोला. तापर एबे हम कथा ब्रिटिश पोजेशंस. भाई से ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट. ब्रिटिश पोजेशन माने होउची कोन? सपोज आपण गोटे झियो को आगे भल पाउचंदी. जदि भल पाउचंदी, that is not recognition. Try to understand. If you are loving a girl, example टिके अलगा होई पारे किंतु बुझियार अछि. If you are loving a girl and you are not marrying, that is not recognition. That is not recognized by the court or by socially सामाजिक स्तर रे बा आईनगत भाव रे ग्रहण करा जाई परिबो नाही. बुझि बचन. Love is not bad, but acceptance in terms of marriage is accepted legally. So what I mean to say, East India Company हम भारत वर्ष को आगे गर्लफ्रेंड करी रखितला. माने गर्लफ्रेंड माने लुटुथला आज्ञा. तो कथा होउची कोन जे एठी शासन करछि बोली प्रथम थर पई. व्हाट आई मीन टू से शासन करछि बोली प्रथम थर पई सारा विश्व रे एबे सना 194 यूएन मेंबर अछन कंट्रीज अछि. सेतो जेती कंट्री थिले 50 पाखा पे कंट्री थिले रिकॉग्नाइज थिले ऑल ओवर वर्ल्ड रे. तो कहबार अर्थ होउची ब्रिटिश पोजेशन शासन करूचो. तांकर लैंड अछि, रेकॉर्ड अछि, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अछि, सब प्रकार अछि. That should be recognized, should be माने तांकर हिसाब रे रिकॉग्नाइज होवा दरकार. सो प्रथम थर पई 1784 मसिया रे जो एक्ट आस्तला सेतिरे ब्रिटिश पोजेशन, ब्रिटिश पोजेस करिछि इंडिया को, माने ब्रिटिश पोजेशन अछि भारत वर्ष रिकॉग्निशन पाइतला. So please remember, under the Patent Act 1784, for the first time globally, it was recognized, yes, India is under East India Company, India is under British administration. बुझी पारछन ए आला कथा बाबूजी बुझी पारथिबे ए पॉइंट ता. चलन इटे बड़ टॉपिक तो स्पीड रे कहै पडुछ. आ जोड़े पॉइंट अछि ते धज्य धरंते एको धीरे कहि दबा. व्हाट आई मीन टू से, नाउ विल बी डिस्कसिंग 1833 चार्टर एक्ट. चार्टर एक्ट मात्र चारिटा पॉइंट अछि. लॉर्ड विलियम बेंटिक आगे बुझंतो. हु इज लॉर्ड विलियम बेंटिक? यस, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. I repeat, first Governor General of India के थे Lord William Bentinck, right? Governor General of India. Governor General of India के थे प्रथमे Lord William Bentinck. किंतु Governor General of Bengal के थे देखि दियंतु के थे क्या? Warren Hastings. Are you getting my point? तो चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पळे बा संग संग सेठी. ठीक, ये कथा क्लियर है. लॉर्ड विलियम बेंटिंक. लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बहुत थर पचारची को मैचिंग रे पचारची विभिन्न थर पचारची. तापर ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्विस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, ओएसओ आईएसओ जहां भी प्रिपेयर करछन ना, तो प्रिपेयर करछन ना, ये प्रकार कांसेप्ट फॉर द, आई रिपीट, फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस कांसेप्ट came under this Charter Act 1833. However, it was not implemented due to opposition by Court of Directors. एबे कथा ही जिबा बेस्तर नहीं. सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करे पर 1833 रे आगे बहुत प्रयास करा जाइथिला, किंतु ये प्रयास नाकाम रहिला, हे परलानी. काहे कि एबे जेमते आपण आईएएस होंतु को ओएस होंतु सिलेक्शन नियंतु केही चाहते ने एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. बा एमने 5-6 लोक चाहिबे आपण आगे ओएस के आईएएस सिलेक्शन नियंतु, टॉप लेवल ले पहुंचो, देशर सेवा करंतु. सेवा को उल्टे दिले बासे महमय की बासिबे, जगत माने उद्धार हबो, सेवार माने मूर्तिमंत प्रतीक हेबे, कार्य करिवे, लोकंकर काम रे आसीबे, बुझिबार प्रतिष्ठा आसीबो, बहुत प्रकार कथा ही परिबे, ह्यूज बड़ा बिग प्लेटफॉर्म पाइबे. ए कथा केही चाहतनी. म आपण कहि रखिया चाहे ज्ञान धन सहज रे के दबा चाहतनी. यू हैव टू वर्क हार्ड. सो व्हाट आई मीन टू से प्लीज रिमेंबर, ओपन कंपटीशन करिबा पई चेष्टा कराइतला. जे भी करू ना, के ब्रिटिश वाला कहंतु के आमे करू, जे भी करू, किंतु आगे करे देले नाही. काई करे देले नि? सब जगह रे आगे निंदुक अछन. एमिति गा नाही माने जोटी निंदुक ना थी, किंतु एमिति बहुत गा अछि जोटी कुओ नथिबो. गोटे कथा अछि ना नहीं. ठीक सेही भली सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हो, ये कथा माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हजम हेलानी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 रे क्रिएट करा जायतिला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहले भाई जाब जदी सिविल सर्विस डायरेक्ट जदी हे जिवो ना, आमे जो ऑफिसर अछि तो लेवल प्रमोशन हबो केमती. तो सेति पई तांको कॉल करा गला, माने एटा अपोज कले, किंतु अपोज कले कोन परे पुणी हेला 1873. सो एनीवे प्लीज रिमेंबर, अटेम्प्ट करायतला सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस करिया पई, किंतु हेई परला नै. परवर्ती अवस्था रहला आमे कथा हबा. तापर लेजिस्लेटिव पावर ना डिप्राइव करा गला. म आपन कहिची
तीनटा प्रेसिडेंसी थिला कौन बेंगल आउ कौन थिला बॉम्बे बॉम्बे आउटे कौन थिला मैं आपको कहूँ ता ना माद्रास बुझे बॉम्बे माद्रास जो ये जो दीटा प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव पावर एको डिप्राइव कर देला माने अलग कर देला जेहेतु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले विलियम बेंटिंग हेले तो भाई साहब हां कि ना तो कथा हो सब पावर एबे इंडिया रो जणे गवर्नर जनरल तेणु सब दीटा को डिप्राइव कर दिया गला बेंगल वाला जे थिले पूरा इंडिया तो हेले गवर्नर जनरल इंडिया तेणु ये दीटा को जो लेजिस्लेटिव पावर मींस लॉ मेकिंग पावर वाला जो चीज ना ताको बंद कर दिया गला आईन कामटा ताको सबऑर्डिनेट कर दिया ले मन रखियो एबे हम कथा बा ईस्ट इंडिया कंपनी जो अछि ना कमर्शियल बॉडी हिसाब रे एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी हिसाब जना सुना थिला हमें भी जानू छन कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज करथु किंतु एई एक्ट 1833 रे अंडर दिस चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आ कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गला ताकू बने दिया गला कोन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कोन बने दिया गला बाबा ताकू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब रे कंसीडर करला माने यू कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी and all the commercial activities of East India Company were came to an end under this Charter Act 1833 1833 रे चार्टर एक्ट रे ये तार जो माने ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलछि ना क्राउन रूल सॉरी कंपनी रूल चलछि ना यार जत्ते कमर्शियल एक्टिविटीज था थप के बंद कर देले बंद करी कोन करले ताको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर देले बाबूजी बुझी परथिबे चलंत आ गोटे से अच्छी स्लाइड बुझदा आ गोटे खेले एक्ट अछि ओ फाइनली असला 1853 एक्ट या पर कंपनी रूल सर जीवो काली करी अपन क्राउन रूल ठीक लोकल रिप्रेजेंटेशन माने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला ना लोकल रिप्रेजेंटेशन एथरे स्टार्ट हला एवं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो अछि ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो एटा सेपरेट कर दिया गला बुझी परछन एको सेपरेट कर दियाला आईन तयारी हबा पई लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को अलग रखा गला आईन को बा कार्यक्षम करिया पे आईन को गोटे सेपरेट करा गला भलो कथाटा इवन टुडे आल्सो वी हैव 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जुडिशियरी वाला एग्जीक्यूटिव वाला लेजिस्लेटिव वाला so what I mean to say it is a very nice step legislative and executive functions of legislative council were separated for the first time under this 1853 charter act एति मन रखिया अछि ओपन कंपटीशन कहउतले हम आपण मानको जोडा 1833 रे हेई पारि नथिला 1853 में कहला सिविल सर्विस स्टार्ट हेगला एवं गोटे कमिटी मध्ये बसला जार नाम अछि माकालू कमिटी 1854 हैला एवं आपण मन रखिया पड़िबे 1855 ऑनवर्ड्स सिविल सर्विस आजिका डेट पर्यंत सिविल सर्विस अनवर्त भाव रे चली इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टिल इट्स कंटिन्यू एति कथा आपण मन रखिया अछि बेसी किछि नाही भाबुची आपण माने कंपनी रूल बुझी परले टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जांदु जहां भी किसी दरकार हम सहयोग करियो थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच